Good morning, my dear students. Today I am going to explain exercise related to this and that. As you can see, here are some examples to related this and that. So let's start. Yes, it is a picture of book. It is a picture of book. किसकी पिक्चर है ये हमारे पास? बुक. अभी बुक जो पिक्चर जो है वो हमारे पास में है, इसलिए हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ किसका यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे. दिस, THIS, दिस. दिस इज अ बुक. दिस इज अ बुक. क्लियर? नेक्स्ट, डैश इज अ डक. ये इट इज अ पिक्चर ऑफ डक. इट इज अ पिक्चर ऑफ डक. डक हमसे डिस्टेंस में है. देखो दूर है ना, हमसे डिस्टेंस में है, दूर है, और दूर के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना है? दैट. कौन सा वर्ड यूज करना है? दैट. THAT, दैट. सेंटेंस रिपीट करेंगे. दैट इज अ डक. दैट इज अ डक. नेक्स्ट, इट इज अ पिक्चर ऑफ एम्ब्रेला. इट इज अ पिक्चर ऑफ एम्ब्रेला. एम्ब्रेला हमारे क्या है? नियर है, पास में है. देखो, that's why we are using here this. This is an umbrella. This is an umbrella. Clear? Next, yes, it is a picture of pen. It is a picture of pen. Pen देखिए बेटा हमसे डिस्टेंस में है, दूर है ये हमसे. That's why we are using here that. THAT, that. That is a pen. That is a pen. Clear? Next, it is a picture of cat. Cat हम लोग के नियर है, पास में है. That's why we are using here this. THIS, this. This is a cat. This is a cat. Next, yes, it is a picture of apple. It is a picture of apple. Apple हमसे देखो डिस्टेंस में है, दूर है. That's why we are using here that. THAT, that. That is an apple. That is an apple. Now once again revise with me. Yes, first picture is book. This is a book. This is a book. Next, it is a picture of duck. Distance में है, that's why that is a duck. That is a duck. Next, umbrella पास में है, इसलिए हम यूज करेंगे this. This is an umbrella. This is an umbrella. Next, picture of pen. That is a pen. That is a pen. Next, cat. This is a cat. This is a cat. Next, apple. That is an apple. That is an apple. Understood, students? Thank you so much.